Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Reproductive Biology of Angiosperm. This is lecture number 12 and this is specially for +3 5th semester student. And today we are going to start another new topic for everyone, that is male germ unit or short form re take कहूछु MGU. Okay, so male germ unit कहा के वजह से let's discuss about this MGU. Now, if you see in case of your pollen grain, when the pollen grain that is formed, and the pollen grain our kind of formation करसे pollen tube formation. And in that pollen tube, if you see more closely, at first there will be entry of the vegetative cell, and just after that vegetative cell, there will be presence of your two male gametes. Okay, so देखो আমার দুইটা মেল গ্যামেট ফর্মেশন হইছে, this is male gamete 1, this is male gamete 2, and this one that is the vegetative cell. And আমার যেন pollen tube formation হইছে, pollen tube টা আমার কানা है, that is the extension of the intine, extension of intine. Okay, so that if you see outside the intine, you will find that is your axine. Okay, so anyway, our vegetative cell আছে, that vegetative cell is connected with some cytoplasmic strands with that of one of the male gamete. If you see here, our যেতবেলে pollen grain টা pollen tube formation করছে, সে টাইম রে ফার্স্ট কে এন্টার করছে pollen tube ভিতর কে, that is your vegetative cell, or this one that is the vegetative nucleus. Vegetative nucleus. Okay, then इधर पचे पचे दुईटा male gametes present अछन, इ दुईटा होचन हमर काना, these are male gametes. Okay, and इ जन दुईटा male gamete अछन, इमान को गोटे टेक्निकल टर्म यूज कला जोचे, गोटे हला sperm cell 1 आ गोटे हला sperm cell 2, गोटे के कहा जोचे SC1 and another one that is SC2. SC1 kana sperm cell 1 and SC2 hela sperm cell 2. देख दुईटा sperm माने kana male gamete, तो इन male gamete के हमें नया term यूज करूँ for the plant also sperm cell 1 and sperm cell 2. तो vegetative nucleus that is directly come in contact with the sperm cell 2 by some cytoplasmic strands. Okay, तो देखो हमर एनजीओ टा कने इजन टोटल स्ट्रक्चर रहला के वेजिटेटिव न्यूक्लियस, देन स्पर्म सेल 1 एंड स्पर्म सेल 2, इ तीनी जण के मिसे करी टोटल स्ट्रक्चर के हमें कहूछु काम बोले करी, दैट इज कॉल्ड एज एमजीयू. एतके के कहूछु एमजीयू. एमजीयू काना दैट इज द कॉम्प्लेक्स that is formed by vegetative nucleus, sperm cell 1 and sperm cell 2. तीन टक्के collectively कहूँ हमें काम बोले करी MGU और male germ unit. The germinal cell हमर कहा के कहा जैसे जे कि germination कर से गोटे नया organism formation करी पारबा, ताके कोई समय germinal cells बोले करी कहसु. तो here male gametes that is your germinal cell or that is the male germ cell बोले करी कहूँ. तो male germ cell or the male gametes कहार संग एसोसिएट हिकरे अछि, वेजिटेटिव न्यूक्लियस संग एसोसिएट हिकरे अछि. तो तीनी जन को एसोसिएशन के कहला में काम बोली करी, दैट इज नोन एज योर मेल जर्म यूनिट बोली करी कहला. ओके, सो इन दैट मेल जर्म यूनिट काना हला देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, मेल जर्म यूनिट रे वेजिटेटिव न्यूक्लियस ता स्पर्म सेल 1 संगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स द्वारा कनेक्ट हिचे. वेजिटेटिव न्यूक्लियस कनेक्टेड विथ sperm cell 1 by a cytoplasmic strand, by cytoplasmic strands, whereas the sperm cell 2 that is not come in contact with the vegetative nucleus, but sperm cell 2 that is not in contact with vegetative nucleus. Okay, sperm cell 1 टा कार संग कनेक्ट हिकरी अछि वेजिटेटिव न्यूक्लियस द्वारा.
कहार देकरी कनेक्ट हे जे किछरा साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस जाके कहू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बोली करी कहू okay, and all these three components are collectively or they are complex, that is known as what male germ unit बोली करी कहू okay. What happen in that male germ unit amar काम काना देखो male germ unit रो तो significance जदी देखमा काना हबा देखो जे हमर पोलन ट्यूब केते बेले फॉर्मेशन हसे जते बेले पोलन गेंटा स्टिग्मा ऊपर पड़सी राइट. तो हमर जदी सपोज दिस वन दैट इज स्टिग्मा हला एंड स्टाइल पर दिस वन दैट इज द ओवरी राइट. ओवरी रो भितर हमर काना प्रेजेंट अछि ओव्यूल एंड ओव्यूल रो भितर हमर काना प्रेजेंट अछि एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो सैक रो भितर हमर काना प्रेजेंट अछि फीमेल गैमेट ओके. तार संगे संगे हमर सिनर्जिड्स एंटीपोडल सेल एंड द सेंट्रल सेल प्रेजेंट अछि. तो काना एस्ते देखो इनो हमर पोलन ग्रेन इनो जर्मिनेशन कला परे पोलन ट्यूब देकरी हमर काना एंटर करूचे पोलन ट्यूब देकरी हमर मेल गैमेट्स ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करूछन ठीक अछि. माने मेल जर्म यूनिट ता ट्रैवल करूचे कहार देकरी ट्रैवल करूचे थ्रू द पोलन ट्यूब ओके. सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस. तो इटा हमर वेजिटेटिव न्यूक्लियस रो परे परे these are the sperm cell 1 and sperm cell 2 sperm cell 2 and sperm cell 1 okay. And this one that is the vegetative nucleus okay. तो total टा हमर आउछ कि that is your male germ unit MGU केना लिखे मूव करछे टुवर्ड्स द ओव्यूल इनो हमर ओवरी रो भितरे काना प्रेजेंट अछि ओव्यूल प्रेजेंट अछि this one that is the ovule okay. ovule ro bhitre amor present ache embryo sac this is our embryo sac and embryo sac re amar kana ache this one that is the egg these two are the synergids this one that is the binucleated central cell and here three cells are there that is called as your antipodal cell okay. So what happened here this will move towards the ovule and that has to be the pollen tube has to be enter inside the ovule and that has to be go for the fertilization because male gamete female gamete ro काना हवा fusion हवा कहार भितरे fusion हवा inside the ovule. तो काना होचे देखो let's see here further काना हवा okay. So amar ino काना हवा further मानेकर pollen tube enter कला pollen tube enter कला परे here what will happen this one that is the axle रो साइड साइड रे हमर जुड़े काना थि सिनर्जिड देखो मई जगह लेबलिंग कर दउ से कैंसल के काना कहसु these two are the synergids इतर बाबद रे फिर हमें डिस्कस करमा जतले फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेट रो डेवलपमेंट पढ़मा सेंटर रे अच्छा हमर काना दैट इज द एग और फीमेल गैमेट अछि फीमेल गैमेट प्रेजेंट अछि ओके. एंड हियर तीनटा सेल अछि हमर इस साइड रे जाके कहसु हमें काम बोली करी दैट इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल राइट. एंड सेंटर रे दिस वन दैट इज द बाइन्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल इता के कहसु हमें सेंट्रल सेल केतरा न्यूक्लियस अछि इतर पाके दुईटा n plus n एंटीपोडल सेल माने n तीनटा अछि सिनर्जिड जुड़े n आउ n अछि x सेल गुटे हमर हैप्लॉइड सेल है सिंगल n पर द स्पर्म सेल दैट इज आल्सो हैप्लॉइड स्पर्म सेल 2 भी दैट इज आल्सो हैप्लॉइड and vegetative nucleus is also haploid. What will happen next? The pollen tube enter inside the ovule ovule देखरी जेतबले से एंटर करूची ओके ovule देखरी एंटर कला परे that will come in contact with the embryo sac and embryo sac रे काना करबा रिलीज कर दबा कहा के रिलीज कर दबा तब जन दुईटा मेल गैमेट्स असन इता के रिलीज कर दबा इतर भीतर के and at the same time what will happen हमर जन वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगड़े आगड़े आउस्तला वेजिटेटिव न्यूक्लियस रो काना बा डिजेनरेशन है डिजेनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिजेनरेशन है गला तार पछे हमर के थिला तार पछे पछे आउस्तला हमर मेल गैमेट्स माने आउस्तला
So these are the male gametes. Male gametes माने काना गुटे होचे हमर sperm cell 1 out of sperm cell 2. Okay, so what will happen, and in the same time amar then synergid hoche, synergid भी काना करसी just entry before the entry of the male gametes गुटे synergid काना कर जैसे degenerate कर जैसे, तो इटा हला हमर degenerated synergid. Okay, तो हमर enter करला के that is your जुड़े male gamete enter करला भीतर के, this one is one male gamete. Okay, and इतर भीतर हमर काना थिला binucleated central cell, this one that is the binucleated central cell. And हमर आगुटे जन male gamete इतर पछे पछे जीवा, suppose मैं आगुटे male gamete के आरो साइड रे देखे दोछन, suppose this one is another male gamete. ई male gamete ता कार संगे फ्यूज करबा देखो, that will fuse with the egg cell. ओके, इटा हमर केनटा है पहलाटा जे मैं देखाली इटा हला स्पर्म सेल 1, पहला स्पर्म सेल 1 एंटर करबा एंड केन आड़के मूव करबा बाइन्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल आड़के मूव करबा, एंड इटा हला हमर काना स्पर्म सेल 2 कार संगे फ्यूज करबा एक्स संगे फ्यूज करबा. ओके, सो देखो टिके बोर करी डायग्राम काटी दोछे, इटा जदी हमर एम्ब्रियो सैक हला, एम्ब्रियो सैक भितरे इटा जदी हमर एग हला, इटा जदी हमर binucleated central cell हला, and here these are the antipodal cell हला. त हमर के एंट्री करथिले इधर भीतर के, this one that is sperm cell 1 एंटर करितिला, sperm cell 1, and this one that is your sperm cell 2 पछे एंट्री कला sperm cell 2. ओके, and हमर sperm cell 2 कहार संगे फ्यूज करबा, that will fuse with the egg cell, and sperm cell 1 कहार संगे फ्यूज करबा binucleated central cell. हमर just before the fertilization or just before the fusion of the sperm cell 1 with the binucleated central cell, हमर binucleated central cell टा central तर जे nucleus स्टेशन दुई nucleus fuse करी जासन, and that converted into what secondary nucleus. ये convert जैसे secondary nucleus ने के convert जैसे. ओके, and sperm cell 1 टा तापर secondary nucleus संगे फ्यूज हबा, राइट. तो इनो केतेटा इन हमर n अच्छे, this one that is having n and n. तो हमर देखो इने जे मैं लिखि दूचे, the sperm cell 1 that will fuse with binucleated central cell, cn माने central, sorry, central cell लिखि दूचे फुल्ली, central cell. ओके, और इन हमर काना होचे सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्मेशन होचे, दुई न्यूक्लियस ता फ्यूज करी सेकेंडरी न्यूक्लियस. अच्छा, इना जन जुड़े न्यूक्लियस थिला, ई दुई न्यूक्लियस के हमें काना कहि परमा, दैट इज कॉल्ड योर पोलर न्यूक्लियाई बोली कि कहा जायसी. कान जे पोलर न्यूक्लियाई कहा जायसी, हमें फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट टाइम रे डिस्कस करबा. ओके, सो हमर ई दुईटा फ्यूज हला परे इनो बनबा हमर काना, दैट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ योर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रो फॉर्मेशन हबा, और तीनी न्यूक्लियस रो फ्यूजन हला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन है. स्पर्म सेल 1 that is haploid, binucleated central cell n+1n ये देखमा, तो इनो हमर काना फॉर्मेशन हबा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जन फॉर्मेशन हबा, दैट बिकम व्हाट haploid, ई ट्रिप्लॉइड. ये हबा हमर काना ट्रिप्लॉइड, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम इतार पाखे प्रेजेंट थिबा. तो केतेटा न्यूक्लियस रे जागा रे फ्यूजन होची, तीनटा न्यूक्लियस. तो इस स्टेप के क्वेश्चन में काम लिख रे ट्रिपल फ्यूजन, तो इस स्टेप के क्वेश्चन में ट्रिपल फ्यूजन. सो ट्रिपल फ्यूजन रे क्वेश्चन आसे, ट्रिपल फ्यूजन रे स्पर्म सेल 1 टा इन्वॉल्व होचे ना स्पर्म सेल 2 टा इन्वॉल्व होचे, दैट इज योर स्पर्म सेल 1. ओके, देन हमर 2 नंबर स्टेप देखो, 1 नंबर स्टेप गला, देन 2 नंबर स्टेप देखो, आगुटे स्पर्म सेल जन रहला स्पर्म सेल 2, sperm cell 2 will fuse with the egg cell. Egg cell टा haploid है, sperm cell 2 टा haploid है, and that will leads to formation of what? Zygote. Okay, देखो दुईटा n रो फ्यूजन हिचे means zygote हमर काना हबा, that become diploid और 2n हबा. and इन जन स्टेप होचे, इस स्टेप के कहमा में काम लिखि syngamy, इस स्टेप के कहे से syngamy, that is the fusion of the two same gamete. One is the sperm cell 2 and the egg cell, and fusion halla, that is your syngamy, and syngamy leads to formation of what? Zygote. तो syngamy रे जन हमर न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहउचे, स्पर्म सेल जन इन्वॉल्व रहउचे, केन स्पर्म सेल इन्वॉल्व रहउचे,
that is your sperm cell 2 involvement roche. Okay, so it hela amar kana that is the role of this MGU, but MGU ro vegetative nucleus ta kana kari asi degenerate kari asi just before the entry of the pollen tube inside the embryo sac. Okay, so eta kala amar kana that is your मेल जॉब यूनिट एंड तकर फंक्शन गला तो हमर जनरली जेतले देखु छु हमर मेल जॉब यूनिट केनते हेल्प करू छ द यू नो मेन फंक्शन जे देखमा ऑर्डर ऑफ एंट्री ऑफ द मेल गैमेट्स ताके से आईडिया दो छ मेल जॉब यूनिट एमजीयू केनते आईडिया दो छ दैट गिव्स द आईडिया about the order of entry of sperm cells. केन sperm cell कहार पर एंट्री करू छे कहार भीतर के inside the embryo sac, inside the embryo sac इतर बाबद रे आईडिया दउ छे के that is your MGU or male germ unit. Okay, then it also gives the idea or that will ensure the presence of that particular zygote or the primary endosperm nucleus inside the embryo sac. तो हमर embryo sac रो भितरे जेतबले जेहेतु माने जाइकरी फ्यूजन करबे sperm cell 1 टा कार संगे फ्यूज करबा x संगे and sperm cell 2 टा कार संगे फ्यूज करबा that is with the binucleated central cell संगे तो binucleated central cell अच्छे आउ x cell अच्छे इतर बाबद रे एंश्योर किए प्रोवाइड करछे that is your male germ unit समान अच्छन means sperm cell 1 will fuse to form the endosperm, sperm cell 2 will fuse to form the zygote. Okay, so they also give the or they ensure the presence of x cell and binucleated or polar nuclei कोई परमा polar nuclei in embryo sac. Embryo sac रो भितरे x cell अच्छे and polar nuclei अच्छे इतर idea ensure करूची कि that is your male germ unit. Okay, तापर देखो another one जे it prevent heteropollination or heterofertilization. It prevent heterofertilization कहला it prevent heterofertilization कहा के क्वेश्चन देखो जनरली हमर जेतेबेले पोलन ट्यूब एंटर करछे पोलन ग्रेन जेतेबेले स्टिग्मा ऊपर पडुछे गुटे पोलन ग्रेन नै पडे स्टिग्मा ऊपर बहुत सारा पोलन ग्रेन पडसन तो बहुत सारा पोलन ग्रेन पडुछन मींस बहुत सारा काना एंटर करूछे पोलन ट्यूब एंटर करूछे बहुत सारा पोलन ट्यूब एंटर करूछे मींस व्हाट विल हैपन बहुत सारा मेल जर्म यूनिट एंटर करूछन हमर ओव्यूल रो भीतर के तो हमर हेटेरो फर्टिलाइजेशन के प्रिवेंट करसी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हेटेरो फर्टिलाइजेशन कहा के कहमा हेटेरो माने काना डिफरेंट फर्टिलाइजेशन हेबा डिफरेंट फर्टिलाइजेशन माने काना पूछे देख माने को धरिनियो गुटे पोलन ट्यूब इटा एंटर कला कहार भीतर के एंटर करछे इटा हमर ओव्यूल रो भीतर के एंटर करछे ओके एंड इनो जेन मेल गैमेट आसला ई मेल गैमेट माने कर जाई करी इतर x संगे फर्टिलाइजेशन करता ई मेल गैमेट आसे करी इतर x संगे फर्टिलाइजेशन करता एंड सपोज इन द सेम टाइम आगुटे पोलन ट्यूब एंटर करी जाता इतर भीतर की एंड इतर भीतर जन मेल गैमेट अछि ई मेल गैमेट आसे करी कहा के फर्टिलाइज करता इतर बाइन्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल के मन पर फर्टिलाइज करता माने दुईटा अलग अलग पोलन ट्यूब रोजन मेल गैमेट माने आसुछन one of the male gamete from one pollen tube will fertilize the egg cell, another male gamete from the other pollen tube will fertilize or that will fuse with the binucleated central cell. तो इटा के क्वेश्चन में काम बोली करी हेटेरो फर्टिलाइजेशन बोली करी क्वेश्चन बट जदी हमर मेल जर्म यूनिट गोटे पर्टिकुलर पोलन ट्यूब रे जदी मेल जर्म यूनिट साइमल्टेनियसली जदी तीनटा जाउ छ माने वेजिटेटिव न्यूक्लियस परे परे हमर मेल गैमेट दुईटा जदी साइमल्टेनियसली जाउ छ तो हमर वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो पहला डिजेनरेट करि जबा डिजेनरेट करि गला परे हमर जे दुही मेल गैमेट थिबा एका संगे जदी एंटर करू छन तो अलग कैंसे पोलन ट्यूब रो मेल गैमेट के आसी नाही देली माने बिकॉज़ माने एका संगे जेहेतु एंटर करू छन पहला स्पर्म सेल 1 पोले जबा फ्यूज कर दबा कहा के बाइन्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल के दुई नंबर हमर मेल गैमेट आसबा कहा के फर्टिलाइज कर दबा पछे पछे आउसबा दैट इज योर एक्स सेल सो दैट हेटेरो फर्टिलाइजेशन के प्रिवेंट कर हेटेरो फर्टिलाइजेशन माने काना फर्टिलाइजेशन in angiosperm रे जदी हमर फर्टिलाइजेशन होउचे
where जिन जगह रे की one male gamete from one pollen tube fuse with excel संग fuse होतबा and आगुटे other male gamete other pollen tube आगुटे pollen tube असला other pollen tube, okay, another male gamete from other pollen tube out a pollen tube asla and that fertilize or that fuse with the binucleated central cell संगे fuse होला तो दुईटा अलग अलग different pollen tube रो involvement रहला in the fertilization. Okay, one pollen tube performing the syngamy, other pollen tube or the other male gamete of other pollen tube performing the triple fusion. Okay, ताके कहूचा में हेटेरो फर्टिलाइजेशन बट मेल जर यूनिट जदी अछि एका संगे तीनटा जदी आसुचन ग्रुप ही करी then that male germ will prevent the hetero fertilization in case of your angiospermic plant. Okay, so if you see the last one me cover के भूरी जाइतिले who discovered this male germ unit in case of your angiospermic plant जे देखमा discovery last one तब इट हमर मेल पार्ट रो पूरा कंप्लीट हला नेक्स्ट क्लास रो में स्टार्ट करमा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो इता जस्ट हमें एमजीयू रो डिस्कवरी बाबत रे डिस्कस कर दो. ओके, हु डिस्कवर एमजीयू वाज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन एंड फिशर in 1970 रे एमजीयू दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन एंड फिशर बट एमजीयू टर्म ता के देथिले एमजीयू term that was given by Dumas et al. Means Dumas and his colleagues. Okay, and another question I see जे हमर MGU टा पहला केन प्लांट रे स्टडी करा जाइथिला MGU that was studied first in one of the plant Plumbago gelanica. Okay, so Plumbago gelanica plant रे MGU का पहला स्टडी करा जाइथिला. So this is all about the male germ unit in case of your angiospermic plant. If any doubt you can write in the comment section. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.